Good evening, everyone. Warm welcome to all. This is the post market analysis video where I will share the market outlook for 4th February 2022. First of all, I will discuss about the index trades and then I will give you some of the stocks that can be considered for positional trading purpose. So I've not been active on the YouTube channel since a lot of days and this inactivity will continue for the coming week. The reason is I'm working on a project. I'm working to launch something new for you all, and that will be regarding futures and options trading. So I will be working on that project for the coming week, and that is why I will remain inactive on my YouTube for the next week also. So I just got some time, and now I can prepare a video for you all, and that is why I'm preparing this market outlook video for you all today. And also कि कल last trading day है week का, that is why I'm here to share some of the stocks. अगर ये कल अच्छी closing देते हैं, then you can consider them for positional trading purpose. Yesterday the data was bullish, but markets opened slightly gap down and थोड़ा सा global sentiment भी weak था. फिर first candle का follow up आया जो negative थी, and then we saw a good fall in intraday in Nifty and Bank Nifty. Okay, so as I always said, price is the primary thing and data is always secondary. So if both are combining, then it's a wonderful trade. मतलब आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी जिस दिन डेटा और प्राइस दोनों एक साथ चलेगा. And sometimes it will happen कि data थोड़ा अलग होगा and price will move in the other direction. On those days you have to follow the price. Okay. Now, today we have seen good amount of selling in cash from FIs and DIs. I have not posted the F&O data today because today was expiry. अब यहाँ पे I have drawn a trend line for you on Nifty 15-minute charts. ठीक है, यहाँ पे एक trend line आ रही है lows से, and once we break this trend line, this trend, ये जो upside वाला trend Nifty में चल रहा है पिछले एक week से, this will get broken. So again, we will start to go towards the other trend, which is on the bearish side of the market. And आज मैंने आपको एक चार्ट दिया था निफ्टी का 5-minute टाइम फ्रेम पे, and जैसे ही we broke this support, good fall happened in the markets. Okay, first we broke this support, then retested, and then again good fall happened in the markets. Now the closing of the market is very poor, and if we see what is happening in the global markets, then US 30 is 0.97% down and US 10 is minus 1.21%. So global markets are weak today, and considering that, we can expect a slightly gap down opening on Nifty or maybe a flattish opening on Nifty. तो अगर flat खुलता है तो it will be easier for the bears to take off this support. ये support तोड़ना बहुत आसान होगा bears के लिए on a flat opening, and then we will see some fall in the markets. जो आपको first target easily ये level मिल सकता है. यहाँ पे जो resistance थी, this can become a support. First of all, ये level आप यहाँ पे देख सकते हैं, and if we take out this level, then we can move towards our next targets of 250, 17,250. So tomorrow can be a trending day. If today's low is broken on Nifty, then we can see a good new low on Nifty tomorrow of this week. Okay, so let me show you the daily charts. First of all, daily charts पे जब भी ऐसी बड़ी सी red candle बनती है and उसका follow up आता है, you see good fall in the coming days in the market. Okay, यहाँ भी एक ऐसी candle बनी थी, उसका follow up आया and then a considerable fall हुई markets में, and again we have made such kind of a candle. तो if we give a follow up tomorrow, इस कैंडल का फॉलो अप आता है, कल मार्केट अगेन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, देन वी कैन सी गुड फॉल इवन इन द कमिंग डेज. तो ये जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो इट विल नॉट ओनली रिवर्स द ट्रेंड ऑफ लास्ट वीक एंड मे बी एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, वापस से मार्केट थोड़ा बियरिश हो जाए. सो वी हैव टू लुक फॉर दैट एज वेल. ठीक है, नाउ इवन इन दिस बियरिश मार्केट थोड़े से कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके लिए फिल्टर आउट किए हैं, एंड मे बी दी स्टॉक्स आउट परफॉर्म द मार्केट. तो आपको इनको मैं आई विल शेयर द वीकली चार्ट्स. आपको डेली चार्ट्स पे भी यू हैव टू लुक फॉर एंट्री, मतलब यू हैव टू कंबाइन
वीकली चार्ट आपको सिलेक्शन में यूज करना है, जो मैंने आपके लिए कर दिया है. यू हैव टू यूज डेली चार्ट्स नाउ, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेदर वी हैव टू मेक एंट्री और वेदर वी डोंट हैव टू मेक एन एंट्री. ओके, अब ये मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन भी बना दी. नॉट ओनली दिस कैन बी अ गुड इंट्राडे ट्रेड, बट ये आपको हेल्प करेगा कमिंग वीक में भी एक मार्केट में एक स्टांस बनाने के लिए, कि वेदर वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ बियर्स और वेदर वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ बुल्स. सो इट विल मेक इट इजियर फॉर यू. तो जैसे ही ये ट्रेंड टूटेगा, ये अपसाइड का जो ट्रेंड है लास्ट एक वीक से चल रहा है, देन वी विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स बियरिश साइड पोजीशंस. बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है निफ्टी से अभी, एंड दैट इज व्हाई निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन अप्रोच कर दी है अपसाइड की, बट बैंक निफ्टी इज येट टू कम टू दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, तो इट कैन हैपन टुमारो दैट वी सी बैंक निफ्टी ऑन दिस ट्रेंड लाइन, एंड ये तब होगा जब ये वाला जो लो है, ये वाला जहां से कल ब्रेकआउट आया था, when we start to sustain below this low. Okay, so as the closing of bank nifty is also near its low, bank nifty की closing भी काफी poor है. So as soon as we start sustaining below this big green candle जहां से breakout आया था, we will first achieve this target of gap. ये गैप अचीव कर लेंगे हम, एंड गैप से हो सकता है मार्केट वंस टेक सपोर्ट. कोई भी गैप है तो इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट ऑल्सो. यहाँ से सपोर्ट लेके वी कैन अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द हायर साइड, एंड अगर फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने लग जाती है, देन वी कैन अगेन लुक फॉर सेलिंग और अपना टारगेट ये ट्रेंड लाइन ले सकते हैं. तो इस ट्रेंड लाइन तक बैंक निफ्टी कैन कम either tomorrow or maybe it happens on Monday. So as soon as Bank Nifty is sustaining above this trend line, we can't plan bearish side trades for a swing view. Instead, we have to look for a buy side view when we come to this trend line. अगर यहाँ trend line पे आते हैं और reversal show करते हैं, then we have to look for buying side positions. Unless and until we don't break this trend line, we can't have a swing bearish view on Bank Nifty. तो ये एक simple सी analysis है Bank Nifty की. अब एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ विच इज नॉट लुकिंग राइट नाउ कि ऐसा होगा, बट एज डेली अपन देख रहे हैं मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हैं, एंड ओवरनाइट लॉट ऑफ थिंग्स हो जाती है मार्केट में, एंड समटाइम्स ऐसा होता है गैप डाउन होते होते गैप अप हो जाता है. तो इन दैट केस एक लेवल बता देता हूँ, एंड जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा वी कांट कंसिडर बुलिश साइड पोजीशंस एग्रेसिवली इन द मार्केट. तो आज यहाँ से 3 टाइम टेस्टेड सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है. अनलेस एंड अंटिल ये सपोर्ट क्रॉस नहीं हो जाता वापस ऊपर की तरफ एंड मार्केट सस्टेन नहीं करता, वी कांट लुक फॉर बुलिश साइड पोजीशंस एग्रेसिवली इन द मार्केट. ठीक है, अगेन अगर गैप अप होता है मार्केट्स इस सपोर्ट को टेस्ट करता है, देन अगेन ये रेजिस्टेंस बनेगी एंड मार्केट कैन अगेन कम डाउन. ठीक है, सिमिलर चार्ट है बैंक निफ्टी का भी. यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया है ऑन दिस लेवल, एंड यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन आया था बैंक निफ्टी में. तो इसमें भी सिमिलर थिंग हो सकती है. अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो देन मार्केट्स कैन गो टू दिस लेवल और इसको रेजिस्टेंस बना के फिर फॉल स्टार्ट कर सकता है. तो अनलेस एंड अंटिल वी स्टार्ट टू सस्टेन अबव दिस, वी कांट थिंक ऑफ बाइंग साइड पोजीशंस. तो मैंने आपको ये भी बता दिया है लॉन्ग साइड की पोजीशंस कब प्लान करनी है इन केस ऑफ अ गैप अप के केस में आपको ये वाला जो 3-4 टाइम्स टेस्टेड सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन सकता है. तो अनलेस एंड अंटिल वी डोंट स्टार्ट टू सस्टेन अबव दिस लेवल, वी कांट थिंक ऑफ बाइंग aggressively in the markets. अभी कुछ स्टॉक्स हैं, आई एम गोइंग टू शेयर द वीकली चार्ट्स ऑफ देम, एंड उसको आप डेली पे ट्रैक कर सकते हो. अगर एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है आपको वीकली, देन आप थोड़ी पोजीशन साइज से एंटर कर सकते हो, एंड थोड़ा सा पोजीशन साइज आप अभी कम रखना, बिकॉज मार्केट में अगर मार्केट थोड़ा बियरिश होगा तो हो सकता है इन स्टॉक्स में रीटेस्ट आए, एंड देन यू कैन एंटर मोर. ओके, so that can be done. Sorry guys, due to an urgent call, I have to pause the video. So now let me start again. तो यहाँ पे I am sharing with you the weekly chart of Everest Industries, and Everest Industries में एक weekly breakout है. So I'm just telling you कि if you are entering into any stock with a positional purpose, try to keep your quantity small. As अगर निफ्टी में थोड़ा breakdown होगा तो maybe markets become weak, एंड उस वजह से आपके जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो रीटेस्ट करके फिर कंटिन्यू करें. तो एट रीटेस्ट यू कैन कंसिडर बाइंग सम मोर क्वांटिटीज. सो दैट इज अगेन अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल, फॉर ऑल दीज पोजिशनल ट्रेड्स. एक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को आप कंसिडर कर सकते हो. यू कैन ट्रैक दिस ऑन डेली चार्ट्स फॉर योर एंट्रीज.
अनदर स्टॉक इज वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज ने भी कल ऑल टाइम हाई मारा था अपना इंट्राडे में, एंड आज थोड़ा सा नीचे था स्टॉक, बट टुमारो अगर एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है अबव प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स, और ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी इसके ऊपर अगर we can close tomorrow, then we can consider this stock as well. This stock is also looking good, and also the volume development is good in VIP Industries. The third stock that I have selected is HBL Power. तो अगर इसकी क्लोजिंग कल अच्छी होती है, इसकी क्लोजिंग अच्छी होती है above this previous all time high levels, then you can consider this one as well. Also, this is a very good fundamentally stock. Fundamental are very good in this stock, and volumes भी काफी अच्छी है पिछले 2-3 वीक से, so you can consider this one as well. अगर कल डेली पे अच्छी क्लोजिंग आती है एंड ये वीकली पे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल से ब्रेकआउट देता है, then it can be considered for a positional trade. Another one is Brigade Enterprises. Brigade Enterprises का वीकली चार्ट पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, एंड इफ आई शो यू द डेली चार्ट्स, तो डेली चार्ट्स में एक बहुत अच्छी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड दिस कैन ब्रेक टुमारो। द रीजन इज कि आज बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स आए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के, एंड देयर इज अ गुड चांस कि वी कैन ब्रेक आउट फ्रॉम दिस रेंज टुमारो। हो सकता है गैप अप हो जाए एंड इस रेंज के बाहर खुल जाए, तो अगर ये गैप अप होने के बाद कंटिन्यू करता है देन वी कैन कंसिडर दिस एज वेल, ओके, फॉर अ पोजिशनल ट्रेड पर्पस। Last stock is HSCL. This is another stock which is looking good on a weekly time frame, but as of now the candle which is closing above this range is not quite considerable. ये थोड़ा considerable part नहीं है because a lot of body is inside the range and only a less part of the body is outside the range. So what we have to do, we can track this stock on a daily time frame. Maybe हो सकता है कि कल ये थोड़ा बढ़े एंड एक और फॉलो अप दे। जब ये फॉलो अप देगा तो वी कैन कंसिडर कि अब ये स्टॉक इट इज लुकिंग गुड फॉर एंट्री, एंड लेटर ऑन जब ये रीटेस्ट पे आएगा, इस वीक को रीटेस्ट करेगा, देन वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव एंट्रीज इन HSCL. तो दिस इज अनदर स्टॉक दैट इज लुकिंग गुड, एंड इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो आई हैव गिवन यू 5 स्टॉक्स: एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, HBL पावर सिस्टम्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एंड HSCL। ये 5 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, and look for the daily chart to enter. I have studied all these stocks on a weekly time frame, and आपको जैसा मैंने बताया, you can look for that risk management approach for your entries. Thank you guys. This was about today's video, and जब भी मुझे next week में time मिलता है, I will prepare some educational videos for you all, and see you guys later on. Thank you guys.